कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति નમસ્કાર, સુપ્રભાત, ગુડ મોર્નિંગ. રવિ શશી ને નવલખ તારા, રવિ શશી ને નવલખ તારા, જગમગ જ્યોતિ ન ઝબકારા,
શોભા તણો નહીં પાર, ઓમ અવિનાશી ઓમકાર. સૂર્ય, ચંદ્ર અને નવલખ તારાઓ નભોમંડળને અજવાશે છે. આપણા TGESના તારકો પણ આપણી TGESની એસેમ્બલીને અજવાળે છે. તો આવો આજની આ એસેમ્બલીમાં હું ગોપી આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. દિનાંક 11 ડિસેમ્બર 2020 અર્થાત શક સંવંત કારતક વદ 11. મનની મૌન વાણીની વાચા એટલે પ્રાર્થના. તો આવો આપણે પણ TGES પ્રાર્થના ગ્રુપની સાથે પ્રાર્થનામય બનીએ. પ્રાર્થના. हे शारदे मां शारदे, हे शारदे मां शारदे, अज्ञानता से हमें तार दे, अज्ञानता से हमें तार दे. हे शारदे मां शारदे, हे शारदे मां शारदे. तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे. हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, शिक्षा का हमारा अधिकार दे. हे शारदे मां शारदे, हे शारदे मां शारदे, अज्ञानता से हमें तार दे, अज्ञानता से हमें तार दे, हमें तार दे, हमें तार दे, हमें तार दे, हमें तार दे.
આભાર આપનો ટીજીએસ પ્રાર્થના ગ્રુપ। સમય સમય બલવાન હૈ નહીં પુરુષ બલવાન, મતલબ કે કલાકનું મોડું થાય તો શું હાલત થાય તે નોકરિયાતને પૂછો, મિનિટોનું મોડું થાય તો બસ, ટ્રેન કે પ્લેન ચૂકી જનાર મુસાફરને પૂછો, અને સેકન્ડોનું મોડું થાય તો પ્રયોગ કરનાર વૈજ્ઞાનિકને પૂછો। આવી જ સમયની વાત લઈને આવે છે અનિશા। તો ચાલો આપણે તેની પાસેથી જાણીએ કે સમયનું કેવું અને કેટલું મહત્વ છે। અનિશા। સુપ્રભાત, હું અનિશા FIBA કંસાગરા કોલેજની છાત્રા। આજે આપ સૌની સમક્ષ આપણા રાષ્ટ્રપિતા એટલે કે ગાંધીજી, જેમની જન્મ જયંતિ 2 ઓક્ટોબરના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે, એમના જીવનનો એક પ્રસંગ પ્રસ્તુત કરવા માંગુ છું। પણ પહેલાં હું આપ સૌને મારી પસંદગીની વાત કરવા માંગુ છું। દોસ્તો, મને નવા નવા પુસ્તકો વાંચવા અને મારો સમય એક એવી પ્રવૃત્તિઓમાં વિતાવવો કે જેમાં મને કંઈક જ્ઞાન મળે એ ખૂબ જ ગમે છે। અને મને જો કંઈક ન ગમતું હોય તો એ સમયનો દુરુપયોગ કરવો, સમય વેડવવો। તો આ સાથે જ ગાંધીજીના જીવનનો એક પ્રસંગ કહું છું। દોસ્તો, આપ સૌને ખબર છે કે ગાંધીજીને સમય કેટલો મૂલ્યવાન હતો। ગાંધીજી કોઈ પણ વખત સમયનો દુરુપયોગ કરવા નહોતા માંગતા। એક વખતની વાત છે, જ્યારે સવારના સમયે ગાંધીજી પ્રાર્થના કરવા જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે એક સમિતિના મુખિયા એમની પાસે આવે છે અને કહે છે કે બાપુ, કાલે અમે એક સભા ગોઠવી છે અને એ સભામાં આપની હાજરી હશે તો અમને ખૂબ ગમશે। બાપુ કહે છે, કંઈ વાંધો નહીં, હું આવીશ, પણ કાલનો સમય કેટલા વાગ્યાનો છે? તો મુખિયા કહે છે કે કાલે 4 વાગ્યે આપ આવી જજો। અને ત્યારે ગાંધીજી કહે છે, જી બિલકુલ। પછી એ સમયે મુખિયા એમને જણાવે છે કે બાપુ, એવું હોય તો હું આપને લેવા માટે આવી જઈશ 4 વાગે। બાપુ કહે છે, એમાં પણ મને વાંધો નથી। બીજા દિવસે 3:45 વાગે બાપુ તૈયાર હતા અને 3:45 વાગ્યા સુધી મુખિયા લેવા ન આવ્યા બાપુ। ત્યારે બાપુને એક યુક્તિ સૂઝી અને બાપુ પોતે જ સભામાં પહોંચી ગયા અને જેવા 4 વાગ્યા ત્યારે મુખિયા બાપુને ગોતવા માટે જાય છે બાપુના આશ્રમ। ત્યારે જુએ છે કે ત્યાં તો બાપુ હતા જ નહીં અને તે જેમ તેમ બાપુને ગોતતા ગોતતા એ સભામાં પહોંચે છે ત્યારે જુએ છે કે બાપુ તો પોતાનું વ્યાખ્યાન આપી રહ્યા હતા। ત્યારે એ મુખિયાને પોતાની ભૂલ સમજાય છે કે સમય કેટલો મૂલ્યવાન છે। દોસ્તો, આપણા સૌના જીવનમાં ઘણી એવી પરિસ્થિતિઓ અને આપણા દરરોજની ક્રિયાઓ બનતી હોય છે કે જેમાં આપણે ઘણો સમય વેડફી નાખતા હોઈએ છીએ। તો આના પરથી આપણને એક સંદેશ મળે છે કે આપણે આપણો સમય ક્યાં પસાર કરીએ છીએ, એક એક મિનિટ, એક એક સેકન્ડની આપણને કિંમત હોવી જોઈએ। ધન્યવાદ। Some has one shape. Some has one shape. Some has many shapes. Some has many shapes. Some has none. Some has none. But I have friendship. But I have friendship. Our next guest is presenting her idea on friendship. So, I would like to call Miss Nidhi.
વેલકમ નિધિ. Good morning, everyone. I am Nidhi from KSNK College and I am going to present a poem which is written by me and it is based upon friendship. So I would like to start now. Without destruction, there is no creation. Without destruction, there is no creation. Without conflict, there is no story. Without conflict, there is no story. Without hell, there is no heaven. Without smile, there is no expression. Without feeling, there is no art. And without friendship, there is no life. And without friendship, there is no life. Thank you. हारना बुरी बात नहीं है, हारना बुरी बात नहीं है, पर हार से बचने के लिए मैदान छोड़ जाना बुरी बात है हौसला बुलंद है, हौसला बुलंद तो जीत आपके कदमों में है, तो जीत आपके कदमों में है हौसला बुलंद तो जीत आपके कदमों में है. यही बात बताने के लिए आज जस्मीन जी हमारे बीच मौजूद हैं. तो आइए जानते हैं उन्हीं से ही उनकी सोच. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. मेरा नाम जस्मीन है. मैं SMT KSN कंसागरा कॉलेज F5 BCom की छात्रा हूँ. आज मैं आपको बताना चाहूँगी मन की सोच. तो चलिए सुनते हैं मन की सोच. ये जितने भी गम, डर, दुख जो भी है बस तेरे अंदर है. तो खुद के बनाए हुए पिंजरे से निकल के तो देख, तू भी एक बड़ा सिकंदर है. अरे डरता क्यों है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही है जो कभी डरा नहीं. याद रखना, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है. प्रयास भले ही छोटे हो लेकिन वो भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं. किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी में कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है. आप कितनी बार हारे हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप तो जीतने के लिए पैदा हुए हैं. अगर हौसला टूटे तो ये बात याद कर लेना, एक ना एक दिन हासिल कर लूंगा मंजिल. ठोकरे जहर तो नहीं जो खा कर मर जाऊंगा. दोस्त, अगर सफलता पानी है तो कभी वक्त और हालात पर कभी रोना नहीं. मंजिलें दूर सही पर घबराना नहीं. अब जो मैं कहना चाहती हूँ वो हम सब के लिए बहुत मायने रखता है. पानी में डूबने से किसी की मौत नहीं होती. मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता. परिस्थितियां कभी समस्याएं नहीं बनती. समस्या तब बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता. जब तक आप अपनी समस्या और कठिनाई की वजह दूसरों को मानते हैं तब तक आप अपनी समस्या और कठिनाई को कभी मिटा ही नहीं सकते. वीडियो के अंत में बस मैं इतना कहना चाहूंगी, जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं को आया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर पल धक्का खाया है, जमाया है सर्द रातों में, तपती धूप में खुद को तपाया है. वही हुए है असल जिंदगी में सफल, उन्हीं ने इतिहास रचाया है. बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है. दोस्त, अगर सफलता चाहते हो तो ताकत रखो अपनी बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है. यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, सफलता पानी है तो अब भी संभल जाओ. मत शोर करो अपने प्रयासों का, खामोशी से अपनी जिंदगी को बदल जाओ. जय हिंद. क्रिएटिविटी तो मननी भाषा है. मन को अभिव्यक्त करने की कला, यानी टू क्रिएट समथिंग न्यू. આપણી દોસ્ત શિવાની પોતાની કલા કંઈક આ રીતે આપણી સમક્ષ પ્રસ્તુત કરે છે. સો લેટ્સ એન્જોય હર ક્રિએશન. Good morning friends, I am Shivani Savalya from KSN Kansagra College TYB. I like painting and I love to create something on paper. So today I will show you a piece of art made from household things. So let's start.
આભાર શિવાની. આપે તો જોત જોતામાં વૃક્ષ બનાવી દીધું ને કંઈ. થિંકિંગ એબિલિટી ઇઝ ધ મધર ઓફ ઇન્વેન્શન. સોચ શોધની જનની છે. આપણે જ્યારે કોઈ મુસીબતમાં હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે તે સમસ્યાનું સમાધાન વિચારીને કરીએ છીએ. તો આવો આજે યોગેશ સર આપણને શાના વિશે વિચારવા કહે છે. पॉइंट टू सोचो. नमस्कार, मैं मिस्टर योगेश. दो शिष्य अपना विद्याभ्यास पूरा करके अब परीक्षा के लिए तैयार है. गुरुजी के पास आते हैं. गुरुजी दोनों छात्रों को कहते हैं कि आप दोनों के लिए एक एक कमरा बनवाया गया है. दोनों को उस कमरे में जाना है. कमरा बंद कर दिया जाएगा. 5 मिनट के अंदर आपको कमरे से बाहर निकल आना है. कैसे आना है वो आपको सोचना है. दोनों विद्यार्थी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं. एक विद्यार्थी सोचता है कि रूम तो बंद कर दिया है. वो इधर उधर देखता है, ऊपर नीचे देखता है कि मैं बाहर कैसे निकलूं. और 5 मिनट का सर ने समय दिया है. वो ढूंढता है कि किसी ऐसी कोई जगह है कि जहाँ से मैं बाहर निकल सकूं. दूसरा जो एक स्टूडेंट है जो दूसरे कमरे में है वो सोचता है कि सर ने 5 मिनट के अंदर बाहर निकलने को कहा है. वो आजू बाजू देखता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो सोचता है ऐसा हो कि कमरा तो बंद कर दिया हो, लेकिन जो दरवाज़ा है वो दरवाजे पर कुंडी ही न लगाई हो. ऐसा सोच के वो क्या करता है, दरवाजे के पास आता है और धीरे से दरवाज़ा खींचता है तो दरवाज़ा खुला ही था. वो बाहर आ जाता है और गुरुजी के पैरों में वंदन करता है. गुरुजी हंसते हैं और जो स्टूडेंट कमरे में है उसके पास जाते हैं. कमरा खोलते हैं और बोलते हैं कि बाहर आ जाओ. दूसरा जो ये स्टूडेंट था वो गुरुजी को बोलता है कि ऐसा क्यों हुआ. तो गुरुजी उसको बोलते हैं कि जो छात्र अपने आप बाहर आ गया उसने क्या किया, मेरी बात सुनी. तुमने भी मेरी बात सुनी थी, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने जो बात सुनी थी उसका एक सर्कल बना लिया और सर्कल के अंदर सोचने लगा. लेकिन जो विद्यार्थी स्टूडेंट था बाहर आ गया उसने क्या किया, सुना, लेकिन उसने सर्कल नहीं बनाया. थोड़ा सर्कल के बाहर सोचा. सर्कल के बाहर सोचा तो वो तुरंत बाहर आ गया. कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि हम सर्कल के अंदर सोचते हैं तो फिर बाहर निकलने का रास्ता नहीं निकलता. तो गुरुजी की परीक्षा में एक स्टूडेंट पास हो जाता है, दूसरे को उपदेश मिलता है. अब मुझे भी सोचना है, आपको भी सोचना है, हम सबको सोचना है. क्या हमारे जीवन में कुछ समस्या इसलिए नहीं है कि हम कोई सर्कल के अंदर रहकर ही सोच रहे हैं, सर्कल के बाहर निकलकर कुछ नहीं सोच रहे हैं. अगर थोड़ा बहुत सर्कल के बाहर निकलकर सोचें तो ऐसा हो कि समस्या के दरवाजे पर कोई कुंडी ही न लगी हो और हम आराम से बाहर आ जाएं. तो मुझे भी सोचना है, आपको भी सोचना है, हम सबको सोचना है. वंदे मातरम. આપનો આભાર યોગેશ સર, સોચવા માટે મજબૂર કરવા બદલ. वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो. वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो. ए शहीदोने शहीदीनी मारा सत सत कोटि नमस्कार. અને દેશના એ વીર સપૂતોને મારી 100 સલામ. Now it's time for national anthem. Let's stand up and sing national anthem.
असेंबली सावधान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। असेंबली विश्राम। સમય સમય સમયનું કામ કરે છે। આપની સાથે તો ઘણું બધું શેર કરવા ઈચ્છું છું, પણ સમયની પાબંદી છે। સો ફ્રેન્ડ્સ, I have to go. બટ ફરીવાર મળવાના વાદા સાથે। ત્યાં સુધી આવજો આવજો। प्रभु प्रार्थना मन प्रेम तारो आप जे। प्रभु प्रार्थना मन प्रेम तारो आप जे। कई खोटू काम करूं तो त्यार मुझने प्रभु प्रार्थना मन प्रेम तारो आप जे। प्रभु प्रार्थना मन प्रेम तारो आप जे। जीवन छे संग्राम कोई नी जीत कोई नी हार छे। जीवन छे संग्राम कोई नी जीत कोई नी हार छे। जाणू छू आ संसार सुख दुख नो सार छे। जाणू छू आ संसार सुख दुख नो सार छे। હું હારથી ન હારી જાઉં એવી હિંમત આપજે। હું હારથી ન હારી જાઉં એવી હિંમત આપજે। હું કરું પ્રભુ પ્રાર્થના मन प्रेम तारो आपजे। प्रभु प्रार्थना मन प्रेम तारो आपजे। प्रेम तारो
का